बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन रस्किन एज एन आर्ट क्रिटिक। तो हम एज एन आर्ट क्रिटिक तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे और एंड पर जो है इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो फेलियर्स हैं, उनको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट क्रिटिक्स ऑफ द विक्टोरियन इरा, ये जो है विक्टोरियन इरा से बिलोंग करते हैं। जॉन रस्किन, जिनकी बर्थ जो है वो है 1819 और डेथ जो है 19 में हुई है, had a major impact on art evaluation of the 19th century. James Nigerian rightly hails him as the most highly theoretical of Victorian critics. His personal views on painting had a huge influence on a host of poets and critics who lived after him. He was also a committed social reformer and believed in the dignity of labor and the importance of craftsmanship. He had complete faith in God and believed that nature and beauty are the gifts of God. Ruskin's most critical comments are founded in his following major works. उसके जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो के फाउंड किए गए हैं, इसके मेजर वर्क्स जो हैं तीन हैं: मॉडर्न पेंटर्स, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन्स ऑफ वेनिस. In all of his books and articles, he stressed the connections between nature, art and society. उसने ज़्यादा जिस पर एम्फेसाइज किया है वो है नेचर, आर्ट एंड सोसाइटी पर किया है. He was a naturalist, an artist and a social reformer. Ruskin's views on art and morality. For Ruskin, art and morality cannot be separated. रस्किन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आर्ट और मोरालिटी जो है इनको हम अलहदा नहीं कर सकते. बोथ आर्ट मीन्स लिटरेचर. बोथ आर्ट एंड मोरालिटी गो हैंड इन हैंड. According to him, good art is always didactic. We might not be aware of the food digestion in our stomach, but it automatically happens. In the same manner, we learn some moral lessons unknowingly. नेक्स्ट फीचर है प्लेटो वर्सेस रस्किन. बोथ प्लेटो एंड रस्किन वर मॉरलिस्ट. दोनों जो थे वो मॉरलिस्ट थे. इन प्लेटोज टाइम्स, प्लेटो के जो टाइम था, इट वॉज जनरल बिलीव दैट द फंक्शन ऑफ आर्ट वॉज टू इंस्ट्रक्ट. लिटरेचर का जो वो फंक्शन है वो हिदायत करना है, इंस्ट्रक्शन है, एज वेल एज डिलाइट, और उस इंस्ट्रक्शन के साथ साथ खुशी भी देना है. बट प्लेटो अपोज द पोइट्स सेइंग दैट morality and delight cannot go together. Plato condemned art because it was immoral, whereas Ruskin welcomed art because it was highly moral. प्लेटो जो है उसने अपोज किया है आर्ट को कि ये जो है इमोरल है, लेकिन जॉन रस्किन ने इसको वेलकम किया है. फॉर रस्किन, the main duty of an artist is to create nobility. Art expresses the truth and morals delightfully. Ruskin weaves on imagination. Ruskin defines poetry and literature as the suggestion by the imagination of noble grounds for noble emotions. Ruskin की definition है about poetry and literature. Here, noble grounds can be understood as the themes selected by the poets, and the noble emotions means the emotions of love, admiration, and joy on the one hand, and hatred, scorn, and grief on the other hand. When these two opposite emotions are combined in poetry, they give poetic feelings. To present these emotions, the artist needs a tool called imagination. According to Ruskin, there are following three functions of imagination: associative imagination, contemplative imagination, penetrative imagination. रस्किन के मुताबिक इमेजिनेशन की जो फॉर्म्स हैं वो तीन हैं, वो यही हैं: एसोसिएटिव, कंटेम्पलेटिव एंड पेनेट्रेटिव. रस्किन एज एन आर्ट क्रिटिक.
As an art critic, John Ruskin popularized the idea of truth to nature, which encouraged painters to closely observe the landscape and in doing so capture the natural world as truthfully as possible. He criticized the poets and artists who romanticized nature in their works. His idea that nature must be represented in art in its raw form influenced the pre Raphaelite poets, a group of young artists who rejected contemporary notions of artistic beauty. His emphasis on realistic presentation of nature in art gave birth to a new movement called naturalism. Ruskin was concerned more with truth than natural beauty. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है आर्ट बेस्ड ऑन मॉरल्स इन हिज वर्क्स रस्किन हैज़ ट्राई टू कनेक्ट मॉरल्स विद आर्ट रस्किन ने ये कोशिश की है अपने वर्क्स में कि उसने मॉरलिटी को जो है ना लिटरेचर के साथ कनेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू हिम आर्ट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन हाई मॉरल्स according to Benson, his real concern was the philosophy of art, or rather, the ethics of art. According to Ruskin, there is a great connection between art and morals. Ruskin overemphasizes the correspondence between art and morality. Thus, Ruskin is only a moralist critic of art and nothing more. अब जो है फेलियर्स जो वीकनेस जो ड्रॉबैक्स हैं इसके वर्क्स में हम उनको देखते हैं वीकनेस ऑफ रस्किन एज अ क्रिटिक ऑफ आर्ट रस्किन लैक्स द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एन आर्ट क्रिटिक जो पहला उसमें वो जो जो वीकनेस है हम उसको देखते हैं फर्स्टली ही शुड हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ आर्ट इंक्लूडिंग इट्स वेरियस स्कूल्स सेकेंडली ही शुड बी impartial. Thirdly, he could not judge art from a moral point of view only. Benson refers to these weaknesses of Ruskin in the following words. Ruskin was never, in the technical sense, an art critic at all. He wrote about art and he wrote about it with considerable technical knowledge. He was a real artist himself and he had a considerable practical knowledge of the aims, the difficulties, the obstacles, the theory and the treatment of art. कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को इन स्पाइट ऑफ द above weaknesses Ruskin was a great critic of art of his own time. He judged art from a moral point of view. Benson summed up his position as an art critic in the following lines. As an art critic, he certainly established a new tradition and the very narrowness of his technical knowledge was probably one of the conditions of his success. तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें साथ साथ अगर कोई मुश्किल हो रही हो तो मैं नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है तो आप मुझ मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करके मैं आपको हार्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी सेंड कर दूँगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़